related to your custom duties. So in last unit, what we are going to do, we are going to study these certain terms, that is, which are related to Custom Tariff Act, then levy of customs, then types of custom duties, then basic duty, what is mean by basic duties, then protective duties क्या होती है, safeguard duty, countervailing duty, subsidized articles, anti-dumping duty, import procedure, export procedure, valuation of import goods and valuation of export goods. Along with this, penalties under GST, penalties under customs and refund. This we will see in the last unit. Okay, so as of now we have studied about the GST. Okay, so under this GST we have studied that SGST, IGST, CGST, UTGST. Getting this? So in case of transactions between within a state, at that time SGST and CGST will be applicable. In case of transaction between two states, at that time IGST will be applicable. In case of transactions between one union territories, at that time UTGST will be applicable. Okay, so in last 4 units we have studied entire GST. This is the indirect taxation which we have studied in the during last 4 units. Now along with this GST is the form of indirect tax which will be paid by the supplier towards the government, and this GST will be collected from your consumers, that we had seen in the last lecture. Okay, now along with this GST, we are saying that government is now only taking only single tax. GST is nothing but it is single tax for single nation, or it is only one tax for entire nation. So earlier whatever are the various taxes we have removed with the help of this GST. Now along with this GST, so we have studied that in case of export of goods and services, at that time export duty or the GST will be nil. हम लोगों ने अभी तक देखा है कि अगर हम लोग हमारा बिजनेसमैन अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड कंट्री को, at that time there is no need to pay any kind of GST. ये हम लोगों ने देखा है. लेकिन in case of import of goods and services within India, at that time is it tax free? It is not tax free. Try to understand. अगर हम लोग कोई भी goods and services export करते हैं, at that time export duty is zero. Export duty is zero, that we had studied in the IGST or in the GST. But when any businessman from India, if he wanted to import goods and services from foreign countries or from foreign territories, at that time how much tax he has to pay? So whatever tax he is paying, that is called as a custom duty. Try to understand. So here whenever you are going to import goods and services from other territories or from foreign territories, at that time you have to pay some import duties, that is nothing but your custom duties. Try to understand. Okay, so this is along as like previous tax, that is GST के लिए GST का रूल बनाया है, GST का एक्ट बनाया है, GST Act 2017. In the same manner, for custom act also there are certain acts, that is Custom Tariff Act 1962, and after that I think it is 1 minute. Yes, it is Custom Act 1962, and along with this one more act is there. Okay, now custom means what? Custom is nothing but it is tax. The tax which is collected by the central government or the government by any country, which is the collected from any country for controlling and collecting tax on the flow of goods into and out of the country. Means what? This is the custom duty which is charged, which is the tax imposed on goods and services
Okay, sorry, it is not on services. This is the custom duty, which is the custom duty, which is the tax which is imposed on the goods when they are transported across the international borders. जब कोई भी फॉरेन बॉर्डर से, इंटरनेशनल बॉर्डर से जब कभी कोई गुड्स इंडिया में आता है, जब कोई गुड्स इंडिया में आता है, एट दैट टाइम along with your certain tax, you have to pay this custom duty, or this is also nothing but it is import duty. Try to understand, whenever we are exporting goods and services across or out of India, at that time this is totally free. But when we bring or when we import goods and services within India, at that time these are not tax free. So where we have to pay the custom duty. Okay, and this custom duty consists of, or there are various forms of custom duty that we have to pay before bringing goods within India. इंडिया में प्रोडक्ट आने के पहले जो मुझे रेट्स भरने पड़ते हैं, दैट इज नथिंग बट कस्टम ड्यूटी. और ये कस्टम ड्यूटी किसको जाते हैं? मेरे गवर्नमेंट को, मेरा गवर्नमेंट. यानी इफ यू आर importing goods and services within India, at that time as a manufacturer, sorry, as a receiver of those goods, I have to pay custom duty towards India. Try to understand. So this custom duty has various forms. So first is the basic custom duty. So this basic custom duty is the as per the rates specified by the custom tariff act. That much amount of duty you have to pay on the certain products. Then second one is the countervailing duty. Countervailing duty means what? Suppose whatever, see here, if any manufacturer is doing the export duty or doing the exports, at that time export is tax free. इसका मतलब टैक्स फ्री है, इसका मतलब गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट के ऊपर सब्सिडी दी है. वही सब्सिडी, टू रिकवर दिस सब्सिडी, वी विल चार्ज सम ड्यूटी ऑन द इंपोर्ट. वही जो दिया हुआ सब्सिडी हम लोग रिकवर कैसे कर रहे हैं? विथ अदर फॉर्म्स, with other forms, and whatever subsidies we are giving to our Indian manufacturers to export goods and services outside India, same amount of tax we are countervailing on the imports. वही ड्यूटी हम लोग, जितना मेरा लॉस होता है एक्सपोर्ट के ऊपर, वही हम लोग कॉम्पेंसेट कर रहे हैं काउंटरवेलिंग ड्यूटी से. Getting this? Along with this, we should have certain additional custom duty or special custom duty. So additional duty means what? It again depends upon the nature of products. कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कुछ स्पेसिफिक ड्यूटीज रहती है. So in addition to custom duty, basic custom duty, in addition to countervailing duty, if you are importing such kind of specific goods which are defined under custom tariff act, if my product belongs to that category, at that time I have to pay certain additional duties. So this custom duty consists of basic duties, countervailing duties, additional duties, and protective duties. Protective duty यानी to protect my domestic industries. Okay, to protect my domestic due to entry of import goods and services. एक import foreign से अगर for example if I am importing one car from foreign territories, at that time what I will do, due to entry of, for example, Kia Motors is the one of the car manufacturing company which is not Indian company. When such kind of products are coming towards India, at that time what will happen? Our Indian market will be captured by these foreign products. Due to which what will happen? Our Indian businessman has to suffer the loss, has to suffer some of the sales. At that time, to protect our Indian businessmen, we should have to provide certain kind of subsidies, and these subsidies will be recovered through these protective duties from imports. Then anti-dumping duties. Anti-dumping यानी for example अगर foreign country में एक product में को क्या है, for example there is no that much of demand, at that time the foreign players will try this product, they will dump their products into our country. At that time,
to not to dump this kind of products into our country, what we will do, we will charge the anti-dumping duty. Getting this? So this custom duty consists of basic custom duty, means what? This is the basic rate that this should be charged. This is the basic rate this should be charged on all kinds of products. So this is something about basic duty. Along with this basic duty, countervailing duty is there, additional custom duty is there, protective duty is there, and anti-dumping duties. So these are the various forms of custom duty we will see in details. But try to understand these are the forms of custom duty. Custom duty is nothing but it is import duty. अभी देखिए, this power of collecting custom duty on imports, it is given by the constitutions of our India. Indian constitution ने दिया हुआ right है under article 265. Okay, why government is collecting this custom duty? Because to collect custom duty on the import, this right as India we have got through our constitution. एक constitution ने दिया हुआ अधिकार है under section 265, which states that no tax will be levied or collected except by authority of law. Means what? To collect any kind of tax from residents, you should have to frame certain laws, and to get this tax we have prepared the laws, we have prepared this act. Okay, and what is that? That is the Custom Tariff Act 1962. So this, as per this act, Indian government is collecting custom duty on the import. Try to understand, जो कोई हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट के ऊपर कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है, सारा एक्सपोर्ट टैक्स फ्री है, जीएसटी नहीं है, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है. But when we are going to import goods and services from foreign territories, at that time, as a importer of this kind of goods and services, I need to pay the duty, that is nothing but custom duty. Okay, now entry number 83 of list first of schedule second of constitution empowers union government to legislate and collect duties on the import and exports. Now what, after the entry of this this GST, now all exports are zero rated. All exports are zero rated. It means that we are not collecting any kind of tax on the export, but to legislate yani to formulate the rules and regulations, to decide the rate of import duty, and to prepare the mechanism to collect these duties. This is under the constitution. So as per the Indian constitution has given us right. Okay, did you understand the background of this custom duty? You just tell me, then we will go ahead. Yes, students, tell me, did you understand the background of custom duty? Are you listening? Are you getting my voice? Yes, sir. So did you understand custom duty क्या है? Background of custom duty? Yes or no? Yes, sir. Okay, तो इतना, सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए कि ये जो कस्टम ड्यूटी है ना, ये इंपोर्ट के ऊपर लगता है, इंपोर्ट्स के ऊपर. एक्सपोर्ट के ऊपर कोई भी अभी एक्सपोर्ट ड्यूटी हम लोग नहीं लेते हैं. तो कस्टम ड्यूटी लेते समय वेरियस फॉर्म्स है कस्टम ड्यूटी लेने के, कि जिसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है. सब प्रोडक्ट्स के लिए सारे ड्यूटीज नहीं होते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन नेचर, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर इंपोर्टिंग. अगर कोई प्रोडक्ट्स ऐसे भी रहेंगे उसमें सिर्फ बेसिक ड्यूटी ही आपको भरना पड़ेगा. कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहेंगे उसमें बेसिक ड्यूटी प्लस काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी भरना पड़ेगा. कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे रहेंगे, फॉर एग्जांपल लिकर, वाइन और सिगरेट्स और एनी काइंड ऑफ अदर सच काइंड ऑफ थिंग्स, व्हेन यू हैव टू पे बेसिक ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी एंड प्रोटेक्टिव ड्यूटीज एज वेल.
as well as you have one more anti-dumping duty. So these are the various categories of custom duty which we have to pay as per the Custom Tariff Act 1962. अभी ये ही बैकग्राउंड ध्यान में रखिए, एंड कस्टम ड्यूटी कलेक्शन करना ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को राइट दिया है. So Indian government is using this right, and by using this right, Indian government is collecting the custom duty. Getting this? And one more thing is that to collect the custom duty, we should have to prepare certain rules and regulations. We have to prepare certain rules. We have to prepare certain laws. For that purpose, we have introduced Custom Tariff Act as well as Custom Act 1962. There are two acts, Custom Act and Custom Tariff Act. So through these laws, through this act, we are collecting the tax and we are managing this tax. Okay. Now next is the objectives of the collecting custom duties. हम लोग कस्टम ड्यूटी क्यों, हम लोग एक्सपोर्ट ड्यूटी तो नहीं चार्ज कर रहे, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी क्यों चार्ज करते हैं? So there are certain objectives. So first objective is, the primary objective behind levying the custom duty is to safeguard each nation's economy, job, environment, resident. To safeguard यानी to protect. So let us take an example. किया मोटर इंडिया में लॉन्च होने के बाद, किया मोटर जब इंडिया में आ गई तो क्या हो गया, मेरा जो इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर था वहां पे क्या हो गया, उनका सेल कम हो गई. गेटिंग दिस? अभी जितना भी मेरे इंडिया के जितना होने वाला है, that loss I can recover through the import duty. So that what will happen when foreign players, when we import the foreign goods, at that time what will happen, our Indian businessmen can suffer certain kinds of problems. So we will count these problems, we will count these types of losses, and this to protect this kind of businesses, what we will do, we will increase the import duty. जैसे कि चाइना का प्रोडक्ट, ओके, अगर चाइना का प्रोडक्ट ज्यादा हमारे इंडियन मार्केट में आ जाएगा तो क्या होता है, इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं, इंडियन गुड्स की वैल्यू कम होती है. इसका मतलब कंपटीशन फेस करना पड़ता है. कंपटीशन फेस करने से क्या होता है, व्हाट विल हैपन, ऑटोमेटिकली if my value of finished product is for example 100 rupees और चाइना का प्रोडक्ट अगर 90 रुपए में यहाँ पे बेच रहा है तो क्या हो जाएगा, चाइना का प्रोडक्ट मेरा प्रोडक्ट का डिमांड खा जाएगा. Getting this? At that time किसी भी, तो ये इंडियन गवर्नमेंट का काम क्या होता है, सो वी विल चार्ज, फॉर एग्जांपल चाइना का प्रोडक्शन कॉस्ट 80 रुपीज है और इंपोर्ट ड्यूटी 10 रुपीज भर के इंडिया में प्रोडक्ट आ रहा है 90 रुपीज को. गेटिंग दिस? एंड द सेम प्रोडक्ट Indian businessmen are selling at rupees 100. Now this is the condition. चाइना का प्रोडक्ट 80 रुपीज का, ओरिजिनल कॉस्ट चाइना की है 80 रुपीज, और इंपोर्ट ड्यूटी चाइना कितना भर रहा है इंडिया में लाने के लिए, इंडियन बिजनेसमैन फॉर एग्जांपल 10 रुपीज, तो 80 + 10 = 90 रुपीज हो गया. When these Chinese products we are selling into in our Indian market at rupees 90, and our Indian businessmen are selling our product at rupees 100, that time which product will get the demand? कौन से प्रोडक्ट को डिमांड मिलेगा? Just tell me. Yes. Which product will be get demand? Either China or Indian product. Are you listening? Give me answer. Very simple question I have asked you. चाइना का प्रोडक्ट है 80 रुपीज का, तो उसका टोटल कॉस्ट, उसका टोटल प्राइसिंग, और इंडिया में हम लोग लाते समय उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट इज टेकिंग टू 10 रुपीज, सो इसका टोटल कॉस्ट हो गया कंज्यूमर को 90 रुपीज. एंड द सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग इन आवर इंडिया एंड वी आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट एट रुपीज 100. At that time my question is, which product will get the demand, whether Chinese or whether India? That is my question.
What do you think? Yes. Are you getting my voice? Yes, sir. अभिषेक, जंगम, मयूरा चौहान, आर यू लिसनिंग मी? Yes, sir. तो मेरा क्वेश्चन क्या था? कौन बताएगा मेरा क्वेश्चन क्या है? चाइनीज का प्रोडक्ट। हाँ, चाइनीज का प्रोडक्ट। राहुल, I think some of the students have just joined and they are not listening, I think. Is it correct? Or all are listening? Just unmute your mics. I just wanted to know whether you are listening or not. Unmute your mics. Unmute your mics. How many students are listening me? Just I wanted to know. तुमचा माइक ऑन करा. चाइनीज का किती लोक ऑन करतायत मला बघू द्या, म्हणजे किती लोक ऐकतात ते मला कळेल. चाइनीज का प्रोडक्ट्स का डिमांड ज्यादा है। Just unmute your mics. All students just unmute your mics. हाँ, Chaitanya is there, Mayuri is there, then Mayura Chavan is there, Deepika is there. What was my question? Tell me, Deepika. Yes. What was my question? बहुत ज्यादा डिमांड चाइनीज का प्रोडक्ट का है क्या इंडियन प्रोडक्ट का डिमांड है? हाँ, तो क्या हो जाएगा? Let us try to understand. See, अगर चाइना का, we are again now see what we are doing. We have relaxed all trade barriers after 1919. हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स भी बाकी कंट्री में बेचते हैं और बाकी कंट्री के प्रोडक्ट भी हम लोग हमारे कंट्री में लाते हैं. Okay, means what? We are in the area of liberalization, privatization and globalization. That's why our Indian businessmen are also selling their goods and services into other countries, and we are, as an Indian, we are also importing goods and services into our countries from other countries. Getting this? Means what? We are also allowed foreign products to sell into our Indian country. Okay, now see, when other countries products comes to into our country, at that time what will happen? It will affect on the our own businesses. तो मान लो अगर किया मोटर इंडियन बिजनेस में, इंडियन मार्केट में आ गई, तो क्या हो जाएगा? मेरे जो इंडियन प्लेयर्स है उनका प्रॉफिट किया मोटर्स खा जाएगी. गेटिंग दिस? अभी उनका जो लॉस होने वाला है वो तो मुझे किधर से तो कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा एज ए कंट्री. क्योंकि क्या हो रहा है, अगर किया मोटर के जब इंडियन मार्केट में एंट्री नहीं हुई थी, तब जितना भी मेरे इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर का जितना भी मार्केट एरिया, कैप्चर एरिया था, तो वो किया मोटर ने टू सर्टेन एक्सटेंट लाइक 10%, 20% उन्होंने कवर किया रहेगा. अभी इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि इंडियन बिजनेसमैन का जितना भी प्रॉफिट था तो वो भी कम हो गया. गेटिंग दिस? बिकॉज दिस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टेकन ओवर बाय दिस किया मोटर्स. अभी नाउ सी हियर, फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कुछ चाइनीज प्रोडक्ट मंगाते हैं, एट दैट टाइम फॉर एग्जांपल वी आर परचेसिंग वन पेन ड्राइव. लेट अस सी, we are purchasing one pen drive from China whose cost is there rupees 80. Getting this?
अभी देखिए अगर 80 रुपीज कॉस्ट है और उसके ऊपर अगर वो प्रोडक्ट एज अ businessmen, Indian businessmen, when they import from China, at that time, when this product is coming towards the India, at that time, I have to pay 10 rupees as a import duty. तो total कितना cost हो गया उसी product का 80 plus 10 is equal to 90 rupees. Means what? This Indian businessman, by importing the product from the China, they are selling this product at rupees 90. But we have also produced one pen drive in our India, and we are selling the same pen drive at rupees 100. Getting this? At that time, what will happen? Who will get the more demand? Chinese product. Why? Because the product is, as a consumer मैं क्या करूंगा, चाइनीज का प्रोडक्ट 90 रुपीज में आता है और मेरा इंडिया का प्रोडक्ट मुझे 100 रुपीज देना पड़ता है. At that time, what I will do? I will purchase the Chinese product. तो चाइनीज प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी. Now, to make both the prices at equal level, अगर मैंने चाइनीज का प्रोडक्ट का ड्यूटी बढ़ाया, फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, 80 रुपीज का उसका तो कॉस्टिंग सेम है. पहले मैं कितना इंपोर्ट ड्यूटी लेता था, 10 रुपीज. अगर मैंने उसको 10 प्लस 10 किया तो 20 रुपीज इंपोर्ट ड्यूटी किया, तो चाइनीज का प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट में कितनी रहेगी, 80 rupees is the cost and 20 rupees is the import duty. Now what is the price of this product into the Indian market? 100 rupees. और मेरा इंडियन प्लेयर कितने को बेच रहा है, 100 रुपीज को, और चाइनीज का प्रोडक्ट कितने को बेच रहा है, 100 रुपीज को. एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, आई विल प्रोटेक्ट. तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेरे इंडियन बिजनेसेस का क्या हो जाएगा, सेल रहेगा. अदरवाइज आई विल चार्ज मोर ड्यूटी. फॉर एग्जाम्पल पहले 10 लेता था, अभी 20 लिया, अभी 30 रुपीज ले दूंगा. अगर 30 रुपीज ले लिया तो क्या हो जाएगा, चाइनीज प्रोडक्ट का मेरे इंडिया में टोटल कॉस्टिंग हो जाएगा 110 रुपीज. गेटिंग दिस? बट माई इंडियन प्रोडक्ट इज सेलिंग एट रुपीज 100. At that time, which product will get the more demand? Indian goods. So by increasing the import duty, I can protect the businesses of our Indian businessmen. इसलिए we have to charge import duty. Getting this? अभी देखिए, here what we are doing, we objective of charging the import duty is to protect the jobs, to protect the Indian businesses, Indian economy, and to protect the environment. What we are doing, we will charge the import duty and we will charge this custom duty by regulating the movement of goods in and out of the country. तो मुझे क्या करना है, मेरे बिजनेसेस को प्रोटेक्शन भी देना है, मेरे जो कस्टमर इंडिया के हैं उनको भी अच्छे खासे प्रोडक्ट्स भी देने हैं. दैट्स व्हाई टू प्रोटेक्ट आवर इंडियन बिजनेसेस, टू इम्प्रूव आवर इंडियन इकोनॉमी, टू इम्प्रूव आवर environment, we can also charge this import duty, that is the custom duty. As well as second objective is to minimize the smuggling of demerit goods, to minimize the smuggling, that is the smuggling यानी theft, म्हणजे चोरी म्हणतो आपण त्याला. To minimize the smuggling of demerit goods such as cigarettes or alcoholic beverages across the borders, since these items are usually highly taxed and their tax rate may also vary significantly across the borders. To stop this smuggling activity on some of the goods and alcoholic beverage, what we will do, we will charge higher custom duties. तो कॉस्ट बढ़ने से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली the product which I am importing from other countries, I will keep control on this and I will prefer my Indian made products. अगर import duty ज्यादा बढ़ा है तो क्या हो जाएगा, with respect to your tax, you have to pay this duty as well. Getting this? तो यहाँ पे एक्सपोर्ट तो जीरो रेटेड था, लेकिन इंपोर्ट क्या है, whenever we are importing goods and services, at that time we have to pay two tax. एक तो मेरा CGST IGST जाएगा
और दूसरा कौन सा जाएगा, मेरा इंपोर्ट ड्यूटी जाएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. व्हेन आई import goods and services from other country, at that time first thing I have to pay GST. तो GST कितना भरना है, that is nothing but IGST मुझे पेमेंट करना है. अदर कंट्री से कुछ माल आता है तो उसके ऊपर मुझे IGST पेमेंट करना है. And along with this IGST, I have to pay import duty as well. Means what, I have to pay two types of taxes. Two types of taxes I have to pay. वह एक टैक्स है मेरा GST, वो तो मुझे पेमेंट करना है, और दूसरा टैक्स है मेरा कस्टम ड्यूटी. Now, the quantum of custom duty in India depends upon the provisions of, that is the Custom Tariff Act 1975 and Custom Act 1962. Now, Custom Act 1962 is your basic tax or basic act. Getting this? And after that, to decide the tariff rates yani rates of these customs, we have once again prepared the Custom Tariff Act 1975. Okay, then this Act 1962 is the principal act which governs entry or exit of different categories of vessels, aircrafts, goods, passengers into or outside the country. So Custom Tariff Act is the principal act in which there are various categories. कौन से category के goods and services के ऊपर कितना कौन सा टैक्स लगने वाला है, whether this is tax free or taxable custom, that we have mentioned under Customs Act 1962. And this act is extends to whole India. This tax is applicable to entire India. Okay, now next one is, अभी देखिए, वी हैव सीन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ कस्टम ड्यूटी. कौन से कस्टम ड्यूटी में देखा है हम लोगों ने, बेसिक कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी. लेट अस सी इन डिटेल. सो फर्स्ट इज कॉल्ड एज अ बेसिक कस्टम ड्यूटी. अभी बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या है देखिए, इट इज द बेसिक ड्यूटी is the type of duty or tax imposed under Custom Act 1962. This is the basic, yani minimum duty which will be charged on the import of goods. So this is the basic duty, and this basic duty varies from different items. हर एक item के ऊपर उसका rate depend होता है, and this varies from 5% to 40%. अगर मैं नहीं चाहता है कि दूसरे कंट्री से ये प्रोडक्ट मेरे कंट्री में इंपोर्ट होना चाहिए, एट दैट टाइम व्हाट आई विल डू, आई विल इंक्रीज द रेट. तो जो जैसे भी ज्यादा रेट बढ़ाऊंगा तो उससे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, उसके क्या बढ़ेंगे, उसकी कीमतें बढ़ेंगी. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ पेट्रोल, ऑयल्स एंड गैस. हम लोग कस्टम ड्यूटी पे करते हैं. Try to understand this. So whenever we are importing goods from foreign countries, at that time we have to pay the import duty. कितना परसेंट है, पेट्रोल के ऊपर approximate 35% हम लोग import duty भरते हैं, and this import duty goes to the central government. Try to understand. पेट्रोल का एक्चुअल प्राइस कितना होता है और उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कुछ टैक्स चार्ज करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ टैक्स चार्ज करता है. जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करता है उसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, एंड वो होता है, अभी मान लो अगर पेट्रोल के प्राइसेस पर लीटर है 110 रुपीज, लेकिन उसका एक्चुअल प्राइस कितना है, दैट इज अमाउंटिंग टू रुपीज 40 ओनली. तो 40 के ऊपर 40% इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स करेगा, तो 40 + 40 80 हो जाएगा, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ ड्यूटी चार्ज करेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो बेसिक ड्यूटी जो होती है, दिस इज द बेसिक ड्यूटी, दिस इज द मिनिमम ड्यूटी दैट वी विल चार्ज. दिस बेसिक ड्यूटी वेरीज फ्रॉम मिनिमम 5% to 40%. So this is basic custom duty. The duty rates are mentioned into the first schedule of Custom Tariff Act 1975. तो उसके रेट कितने हैं, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितने रेट्स हम लोग चार्ज करते हैं, this is mentioned under Custom Tariff Act 1975. This duty is fixed at specified rate
ऑफ एड वैलोरम बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी पर यूनिट बेसिस पे वो ड्यूटी इट मे बी ऑन पर यूनिट बेसिस और पर लीटर बेसिस और पर किलोग्राम बेसिस और पर बॉक्स बेसिस. सो इट अगेन डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी कैसे पैकेज के ऊपर रहेगा, कुछ ड्यूटीज किलोग्राम के ऊपर रहेंगे, कुछ ड्यूटीज लीटर के ऊपर रहेंगे, कुछ ड्यूटीज क्वांटिटी के ऊपर रहेगा. दैट इज समथिंग अबाउट एड वैलोरम बेसिस. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ राइट टू एग्जम्प्ट एनी गुड्स फ्रॉम टैक्स. ठीक है, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लेना है, कौन से प्रोडक्ट एग्जम्प्टेड रखना है, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ राइट टू डिसाइड. So just try to understand this is the basic duty. Basic duty is means what? This is the fundamental or this is the minimum duty which is charged on the imports. This duty is mentioned under Custom Tariff Act 1962 and कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितना ड्यूटी लेना है that is mentioned under Custom Tariff Act 1975. And this basic duties rate of basic duty varies from 5% to 40%. And government has a right which product they should exempt from the import. Getting this? Then next one is the countervailing duty. Just go through this slide, then we will discuss क्या होता है countervailing. Just read this slide, then we will discuss about the countervailing duties. Done? Gone through this slide? Yes, students. Read this slide, entire slide, yes or no? Yes, yes. हाँ, अभी Yes, sir. देखिए हम लोग इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे. आई विल गिव वन एग्जाम्पल. जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल इन इंडिया and when I will sell this mobile within India, at that time which type of tax I have to pay? अगर इधर का ही मैन्युफैक्चरर है और इधर ही अगर बेचता है तो कौन से टैक्सेस उसको पेमेंट करना पड़ता है? टेल मी. We had already seen this. जीएसटी में हम लोगों ने पढ़ा है ना, यस जीएसटी एज वेल एज सी जीएसटी आई हैव टू पे. अगर मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर माल बेचता हूं, एट दैट टाइम आई हैव टू पे आईजीएसटी. गेटिंग दिस? अगर देखो कितना आईजीएसटी का रेट है. फॉर एग्जांपल में अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट एक स्टेट से महाराष्ट्र से गुजरात सेंड करता हूं तो आई हैव टू पे 18 रुपीज. फॉर एग्जांपल रेट ऑफ जीएसटी 18 रुपीज रहेगा तो 100 के ऊपर मुझे 18 रुपीज चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा. बिकॉज आई एम selling my goods and services within a country, that time I am able to pay GST.
देखिए, अगर मैं वही प्रोडक्ट अगर मैंने इंडिया में सेल आउट किया तो मुझे कितना टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा है? 18 रुपीज ऑफ रुपीज 100 का प्रोडक्ट है, 18 रुपीज मुझे चार्ज करना पड़ा है. बट इमेजिन इफ आई एक्सपोर्ट द सेम प्रोडक्ट इनटू चाइना और जर्मनी और जापान, तो मुझे कितना टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा है? एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैंने मुंबई से गुजरात माल भेजा तो मुझे 18 रुपीज टैक्स भरना पड़ रहा है. लेकिन वही प्रोडक्ट जो मैं गुजरात में सेल करने वाला था, वही प्रोडक्ट अगर मैं दूसरे कंट्री में करता हूँ, दैट टाइम इट गोज टू अंडर द एक्सपोर्ट्स, एंड एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड. मींस व्हाट? देयर इज नो नीड टू पे टैक्स बिकॉज आई एम एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं लगता है. सो दिस इज द इंडियन सिनेरियो. इन द सेम मैनर इफ यू कंसिडर अदर कंट्री, देयर विल बी द सेम सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो. हम लोग इंपोर्ट जो है वो टैक्स फ्री नहीं है, हमारा एक्सपोर्ट क्या है? टैक्स फ्री है. जैसे कंडीशन इंडिया की रहेगी वही कंडीशन चाइना की भी रहेगी. चाइना भी क्या करेगा? एक्सपोर्ट जीरो रेटेड करेगा और इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाएगा. एक्सपोर्ट जीरो रेटेड क्यों है? क्योंकि मेरा जो कंट्री का कंपटीशन कम हो जाएगा. अगर वही प्रोडक्ट मैं इंडिया में जो प्रोडक्ट बेचता हूं, अगर वही प्रोडक्ट हम लोग दूसरे कंट्री में अगर सेल आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा? मेरे बिजनेसमैन जो इंडियन बिजनेसमैन प्रोटेक्ट हो जाएंगे बिकॉज कंपटीशन इज नॉट अवेलेबल देयर. You are manufacturing the goods and services and you are directly exporting into other country. Getting this means what? You are not playing competition with domestic players, so that you will protect your businessmen. Getting this? If you are exporting goods and services into other countries, at that time in the form of foreign exchange, government can also get the foreign currencies. एक्सपोर्ट जीरो रेटेड क्यों है? क्योंकि अगर मैं मेरा प्रोडक्ट टाटा का एक प्रोडक्ट बाहर के कंट्री में बेचता हूं तो टाटा को कुछ पैसा मिलेगा. दिस अमाउंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसीज. डॉलर्स में रहेगा, येन में रहेगा या दूसरी कौन सी करेंसी में रहेगा. सो दिस इज द डायरेक्ट बेनिफिट टू आवर कंट्री एज वेल. दैट्स व्हाई इंपोर्ट्स आर नॉट जीरो रेटेड बट एक्सपोर्ट्स आर जीरो रेटेड. अभी देखिए, अगर हम लोग कोई भी इंपोर्ट हमारे इंडिया में हम लोग लाते हैं, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज लाते हैं, एट दैट टाइम वी हैव टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्यूटी. अगर कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में आता है, इसका मतलब क्या होता है? मेरा जो मार्केट है डोमेस्टिक प्लेयर्स का, वो मार्केट वही प्रोडक्ट खा जाएगा. गेटिंग दिस? नाउ टू प्रोटेक्ट माय इंडियन बिजनेसेस, आई हैव टू गिव सर्टेन अमाउंट ऑफ सब्सिडी टू देम. अगर मैंने एज अ गवर्नमेंट मैंने इंपोर्ट अलाउ किया है, मैंने इंपोर्ट अलाउ करने से क्या हो जाएगा? मेरा जो इंडियन बिजनेसेस थे उसी प्रोडक्ट बनाने वाले, उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा. तो उनको मुझे कुछ सब्सिडी देके उनको सर्वाइव करने के लिए मदद करनी चाहिए. गेटिंग दिस? नाउ उनको सर्वाइव करने के लिए जो मदद मैं करूंगा, वही मदद सब्सिडी के रूप में मैं जो कुछ अमाउंट उनको दे दूंगा, वही अमाउंट मैं कहां से रिकवर करूंगा? इंपोर्ट ड्यूटी से रिकवर करूंगा, और उसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी. So whatever will be the loss suffered by the domestic customers, this loss will be provided in the form of some of the subsidies, and this subsidy will be recovered from the import duty, and that amount of duty is called as a countervailing duty. Okay, now let us go through this slide. The countervailing duties are the tariff levied on the import of the goods to offset यानी to compensate the subsidies made to the producers. जो प्रोड्यूसर को हम लोग सब्सिडीज देते हैं, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? काउंटर वेलिंग ड्यूटी लेते हैं. एंड दिस काउंटर वेलिंग ड्यूटी इज मीन टू द लेवल द प्लेइंग field between domestic producers and same product which is prepared from other countries. To provide the subsidies to their government, to its from their government, we will charge the countervailing duty. This duty is imposed by the central government when the country is paying subsidies to the exporters. हम लोगों ने क्या किया है कि एक्सपोर्ट जीरो रेटेड किया है. अगर वही बिजनेसमैन वही माल इंडिया में बेचते हैं तो हम लोग 18% जीएसटी लेते हैं.
लेकिन वही प्रोडक्ट अगर आउटसाइड कंट्री में अगर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जीरो रेटेड करते हैं, मीन्स व्हाट, वी आर सेविंग। सो यहाँ पे अल्टीमेटली जो मेरा लॉस होता है वही लॉस हम लोग इंपोर्ट से हम लोग रिकवर करेंगे। एंड इफ यू आर रिकवरिंग दिस काइंड ऑफ लॉस थ्रू द इंपोर्ट्स, दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज काउंटर वेलिंग ड्यूटी। जितना भी मेरा लॉस एक जगह पे होगा वही लॉस रिकवर करने के लिए मैं दूसरी मेथड यूज करूंगा, एंड दिस अमाउंट ऑफ duty is called as a countervailing duty. Okay, and the amount of duty which is equivalent to the subsidy paid by them. तो जितना भी हम लोग एक्सपोर्ट के ऊपर सब्सिडी दे दूंगा वही सब्सिडी हम लोग इंपोर्ट से रिकवर करेंगे। Okay, the duty this duty is applicable under section 9 of this countervailing duty is applicable under section 9 of Custom Tariff Act. And these duties are imposed in order to counter यानी nullify करने के लिए क्या, negative effect of import subsidies। तो अगर 80 का प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम लोग 20% अगर बेसिक ड्यूटी 10% लगाया और 10% अगर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाया तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस बढ़ेगी, इंडिया में उसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगी। सो दैट अगर उसकी प्रोडक्ट्स मेरे इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर बराबर रहेगी तो क्या हो जाएगा, मेरे इंडियन बिजनेसेस का क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन हो जाएगा। टू प्रोटेक्ट आवर इंडियन बिजनेसमैन, टू प्रोटेक्ट आवर country made products, we will charge the countervailing duty, and this is allowed as per Custom Tariff Act. So the duties that are imposed in order to counter the negative impact of these import subsidies to protect the domestic producers are called as a countervailing duties. Okay, so this was something about countervailing duties, and this countervailing duties, in addition to basic duty, we are charging some duty to protect our Indian businesses, to protect our Indian products. That duty is called as a countervailing duty. Clear, everybody? What is the difference between basic duty and countervailing duty? So countervailing duty will be not applicable to all these products which we will be importing. So again, it will depends upon nature of your product which you are importing. Yes, students, clear everybody? Countervailing duty क्या है? Did you understand or not? Hello, did you understand countervailing duty? Yes or no? Do I need to give more explanation or is it sufficient? In case of any kind of doubts, you can ask me, because we both are wasting our time. I think you are not listening me, so I will close my session now. Okay, so I think nobody is giving me response, means what, you are not listening me, so I will close this session right now.